video lecture number 1. We completed exercise 4 up to 8 questions. Today we will see continue exercise 4 from question number 9 based on principle of mathematical induction type number 1. So let's get quickly started. Question number 9. Here Pn is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to 1 by 2 raised to n is equal to 1 minus 1 by 2 raised to n, which is equation number 1. आपको पता होगा कि पीएमआई का हर एक साथ हम दो स्टेप से कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट स्टेप फॉर P1 एंड सेकंड स्टेप इफ Pk is true then P of k plus 1 is true. Okay, so step number 1 for n is equal to 1. So LHS of P1. Here LHS of P1, that means लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 by 2. सो RHS of P1, that means put n is equal to 1 in RHS, यानी यहाँ पे n की वैल्यू हमको 1 रखना है. सो 1 minus 1 by 2 it's a 1 by 2, 1 minus half it's a half. सो आप देख सकते हो LHS of P1 is equal to RHS of P1, therefore our P of 1 is true. It is reason number 2. Now for step 2, for n is equal to k, let P of k is true. What is P of k? Put n is equal to k in equation number 1. So P of k means 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to so on 1 by 2 raised to k is equal to 1 minus 1 by 2 raised to k is true, which is equation number 3. Now for n is equal to k plus 1, we have to prove that P of k plus 1, आपको पता ही होगा हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें मेन चीज है P of k plus 1. बच्चों आपको अगर P of k plus 1 कैसे लिखना है वो आपको अगर पता चल जाए तो PMI का हर एक सम आपके इजी हो जाएगा. P of k plus 1 कैसे लिखना है, पहले हम P of k का k टर्म लिखेंगे, यानी P of k का LHS लिखेंगे. तो P of k का LHS है 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to so on 1 by 2 raised to k. अभी उसमें हम नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे. नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? वेरी सिंपल, जो आखिरी टर्म है P of k का, उसमें k को रिप्लेस करेंगे k plus 1 से, यानी जहां पे k है वहां पे हमको k plus 1 लिखना है. तो उसका नेक्स्ट टर्म होगा k plus 1. ऑलराइट, 2 raised to k plus 1. ओके, एंड RHS में भी हमको k plus 1 लिखना है. तो 1 minus 1 by 2 raised to k plus 1 is true, which is result number स्टार. अभी हमको स्टार प्रूव करना है. सो उसके लिए LHS of P of k plus 1 से हम स्टार्ट करेंगे. सो LHS of P of k plus 1, राइट. LHS of P of k plus 1 ये होगा. सो 1 by 2 plus 1 by 4 1 by 8 up to so on 1 by 2 raised to k plus 1 by 2 raised to k plus 1. रिजल्ट नंबर स्टार का LHS मैंने लिखा. दैट मीन्स LHS ऑफ P of k plus 1 लिखा. P of k plus 1 का फर्स्ट स्टेप रहता है रिजल्ट नंबर 3 की वैल्यू रखना हमको. ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 3 में हमको यहां तक वैल्यू पता है. सो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 दैट इज P of k is true, हमने वो लिया था. सो 1 by 2 से लेके 1 by 2 raised to k, उसका एडिशन की वैल्यू है 1 minus 1 by 2 raised to k. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 minus 1 by 2 raised to k प्लस 1 by 2 raised to k plus 1. ओके, अभी हमको इसका सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका सिंप्लीफाई करना है. तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस, इसमें से अगर माइनस में कॉमन निकालूं, फर्स्ट स्टेप माइनस अगर मैं कॉमन निकालूं, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1 by 2 raised to k. ये माइनस अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे b माइनस हो जाएगा और 1 by 2 raised to k plus 1, उसको अगर मैं पावर में अलग करूंगा तो ये चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. ऑलराइट, सिर्फ माइनस कॉमन लिया तो 1 by 2 raised to k और यहाँ पे 1 by 2 raised to k plus 1 है. तो इसका सिंप्लीफाई क्या होगा 2 raised to k into 2 raised to 1,
यानी पावर को अगर आप एडिशन में पावर को सेपरेट करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2k into 2:1। ऑलराइट बच्चों, अभी आप देख सकते हो इसमें से कॉमन निकलेगा 2k डिनोमिनेटर में से। सो 1 माइनस 1/2k अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस 1/2 होगा। ओके, ये 1/2k कॉमन निकाल गया तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। सो 1 माइनस 1/2 इट्स अ 1/2 होगा, 1 माइनस हाफ इट्स अ हाफ। फिर से इसका सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2k plus 1 एंड आप देख सकते हो विच इज RHS ऑफ p of k plus 1 इक्वल टू RHS ऑफ p of k plus 1। therefore p of k plus 1 is true। so p of k is true implies that p of k plus 1 is true, which is result number 4। so from 2 and 4 for all n belongs to capital N by PMI given Pn is true। That's it। so our Pn is true as true। Okay, question number 10. Important questions. Step 1. For n is equal to 1. Here LHS of P1 is equal to क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/2 into 5. So 2 into 5 it's a 1/10. RHS of P1 यानी RHS में n की वैल्यू मुझको 1 रखना है। सो 1/6 into 6 plus 4, 6 into 1 plus 4, 6 plus 4 it's a 1/10। so we can say that p of 1 is true, p of 1 is true। okay, for step 2 for n is equal to k, let p of k, ओके p of k कैसे लिखेंगे, p of n है, जहां पे n है वहां पे मुझको k रखना है। सो 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 11। बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर ले सकते हैं, पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। 2 into 5 अप टू 1/3k minus 1 into 3k plus 2 is equal to k by 6k plus 4 is true। is true। Result number 3 for n is equal to k plus 1, we have to put that p of k plus 1। okay, p of k plus 1 कैसे लिखेंगे, पहले हम LHS of p of k लिखेंगे 1/2 into 5 plus 1/5 into 11 sorry 5 into 8 sorry plus up to 1/3k minus 1 3k plus 2 प्लस इसका मुझको नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो नेक्स्ट टर्म के लिए मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस स्टेप में k को रिप्लेस करना है k plus 1 से, तो आप यहाँ पे k plus 1 लिख सकते हो दोनों में और उसका सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड लॉजिकल मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है, ठीक तरीके से समझना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म 2 into 5 तो नेक्स्ट टर्म हमको क्या मिला, ये 5 यहाँ पे मैंने कॉपी किया, ठीक है। 5 into 8 डिफरेंस कितना है, 3 का है, देख सकते हो। 2 into 5 उसके बाद 5 into 8 उसके बाद क्या होगा, 8 यहाँ पे रिपीट होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, 8 into 11 8 into 11 देख सकते हो आप, ओके। उसके बाद का नेक्स्ट टर्म अगर मुझको फाइंड आउट करना हो 2 into 5 है, चलो डिफरेंस 3 है। फिर ये 5 को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, 5 plus 8 3 8 5 into 8 डिफरेंस 3 है, ठीक है। फिर ये 8 को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, 8 plus 3 11। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 11 into 11 plus 3 14। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 1/11 into 14। तो इसका अगर आपको नेक्स्ट टर्म लिखना हो तो आप देख सकते हो ये दोनों में से ये रिपीट होगा। सो 1/3k plus 2 into इसमें मुझको 3 ऐड करना होगा, क्योंकि
2 plus 3 5, 5 plus 3 8. ओके, नेक्स्ट टर्म 8 plus 3 11. तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 3k plus 2 plus 3. दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k plus 5 इज इक्वल टू RHS क्या लिखेगा यहाँ पे k को रिप्लेस करेंगे k plus 1 से डिवाइड करेंगे k plus 1 आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा 6k plus 6 plus 4. दैट मींस 6k plus 10 is true which is our result number star. ऑलराइट, समझ में आ गई ये लॉजिकल मेथड. अगर आपको ये मेथड इंटरेस्ट नहीं है तो पहले सिंपल नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे इसमें k को k plus 1 से रिप्लेस करेंगे और सिंपलीफाई करोगे तो भी आंसर यही आएगा. ऑलराइट, सो नाउ LHS of P of k plus 1 is equal to चलो 1 by 2 into 5 plus 5 into 8 up to so on. चलो नेक्स्ट टर्म हमारा ये होगा 1 by 3k minus 1 into 3k plus 2. उसके बाद टर्म होगा 3k plus 2 into 3k plus 5. मैंने LHS of P of k plus 1 लिखा है. ठीक है, अभी हमको पता है कि हम क्या करेंगे. पहले हम फ्रॉम 3 यानी रिजल्ट नंबर 3 से वैल्यू रखेंगे. सो फ्रॉम 3 इसकी वैल्यू होगी k by 6k plus 4 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारा 1 by 3k plus 2 3k plus 5. ऑलराइट बच्चों, अभी इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा. डायरेक्ट तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन आप सोचो इसमें से पहले मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k by 2 इन ब्रैकेट 3k plus 2 प्लस 1 by 3k plus 2 3k plus 5. अभी आप देख सकते हो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 1 by 3k plus 2 कॉमन निकलेगा. सो इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा k by 2 प्लस 1 by 3k plus 5. ऑलराइट, नाउ टेकिंग एलसीएम. यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा. सो 1 by 3k plus 2. चलो एलसीएम लो तो एलसीएम क्या होगा 2 into 3k plus 5. ऊपर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3k square plus 5k plus 2. ओके, अभी जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है न्यूमरेटर का आपको फैक्टर मालूम. ठीक है, फैक्टर क्या होगा न्यूमरेटर में आपके पास है 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2. इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे 3 2 6 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका एडिशन 5 आना चाहिए. 3 plus 2 5 होगा. ठीक है, सो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2. फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2. फर्स्ट 2 में से कॉमन निकलेगा 3k तो ब्रैकेट में होगा k plus 1. लास्ट 2 में से कॉमन निकलेगा 2 तो ब्रैकेट में होगा k plus 1. इसमें से फाइनल k plus 1 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या होगा ये k plus 2. ओके, सो न्यूमरेटर में हम ये दो फैक्टर लिखेंगे. दैट मींस 3k plus 2 into k plus 1 न्यूमरेटर में. ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने ये फैक्टर लिखे. डिनोमिनेटर में 3k plus 2 2 3k plus 5. ये 3k plus 2 कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर का ब्रैकेट सॉल्व कर दो. सो k plus 1 by 6k plus 10 which is RHS of P of k plus 1. आप देख सकते हो k plus 1 by 6k plus 10 k plus 1 by 6k plus 10 which is RHS of P of k plus 1. So we can say that P of k plus 1 is true. Therefore P of k is true implies P of k plus 1 is true, which is result number 4. From result 2 and 4 for all n belongs to n by PMI given Pn is true. Okay, question number 11. Again, important questions. P of n 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 up to so on 1 by n plus 1 n plus 2 is equal to n plus 3 by 4 n plus 1 n plus 2. For step 1, for n is equal to 1. Here, LHS of P1 is equal to 1 by 1 into 2 into 3. Fix the 1 by 6.
and RHS of P1 is equal to, यहाँ पे n की वैल्यू हम बदल रखेंगे तो 1 into 4 1 plus 4 divided by 4 into 2 into 3 is equal to 4 4 cancel out, it's a 1 by 6. So we can say that therefore P of 1 is true. Reason number 2. What have we done? For step 2, for n is equal to 3, let P of k is 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 up to so on 1 by k into k plus 1 into k plus 2 is equal to k plus 3 divided by 4 k plus 1 k plus 2 is true. Result number 3. Okay. Now for n is equal to k plus 1, we have to do that p of k plus 1. Okay, यहाँ पे p of k plus 1 होगा 1 into 2 into 3 plus 1 into 2 into 3 into 4 plus up to so on. पहले हम LHS of p of k लिख लेंगे, ठीक है ना? तो k into k plus 1 into k plus 2, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? प्लस आखिरी टर्म में k को रिप्लेस करेंगे k plus 1 से. सो यहाँ पे k plus 1, यहाँ पे k plus 1, यहाँ पे k plus 1. दैट मीन्स k plus 1 plus 1 k plus 2 k plus 1 plus 2 k plus 3 is equal to RHS में हम k plus 1 लिखेंगे. सो k plus 1 into k plus 4, okay, divided by 4 k plus 2 k plus 3 is true. Number start, right? Now LHS of p of k plus 1 is equal to 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 up to so on 1 by k into k plus 1 into k plus 2 and next term होगा k plus 1 k plus 2 k plus 3. हमको पता है हम पहले क्या करते हैं LHS of p of k plus 1 में रिजल्ट नंबर 3 की वैल्यू रखते हैं. सो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 इसकी वैल्यू को हम रखते हैं. सो ओके इज इक्वल टू, चल क्या होगा यहाँ पे हम वैल्यू ये रखेंगे k plus 3 k plus 3 by 4 k plus 1 k plus 2 प्लस लास्ट टर्म ये इसकी वैल्यू रिजल्ट नंबर 3 से वैल्यू रखें और ये वैल्यू 1 by k plus 1 k plus 2 को प्लस 3 यहाँ हम कॉपी करेंगे k plus 1 k plus 2 k plus 3. ऑलराइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग कॉमन क्या निकलेगा 1 over k plus 1 k plus 2 कॉमन. सो इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा k plus 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पे बचेगा k plus 3. ऑलराइट बच्चों. नाउ टेकिंग एलसीएम इन दिस ब्रैकेट. सो 1 डिवाइडेड बाई k plus 1 k plus 2 इन ब्रैकेट 4 k plus 3. चलो एलसीएम लोगे तो k into k plus 3 होल स्क्वायर प्लस ये 4 यहाँ पे आएगा. ओके. सो डिनोमिनेटर में हमारे पास मिल गया 4 k plus 1 k plus 2 k plus 3. ये न्यूमरेटर में k into इसका एक्सपांशन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4. नाउ सॉल्विंग द ब्रैकेट दैट इज k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 k plus 1 k plus 2 k plus 3. अभी मेन लॉजिक न्यूमरेटर में हमको पता चल गया न्यूमरेटर का हमको फैक्टर निकालना है, लेकिन कौन से फैक्टर होंगे? सो हमको जो प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है रीजन नंबर स्टार का RHS. तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में k plus 1 भी है k plus 4 भी है, यानी वन ऑफ द फैक्टर कोई भी हो सकता है. k plus 1 भी हो सकता है k plus 4 भी हो सकता है.
ऑब्वियसली मैं k प्लस 4 ले लूंगा, बिगर फैक्टर है k प्लस 4, सो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को k प्लस 4 एक फैक्टर है तो उससे दूसरे रिमेनिंग फैक्टर्स हम निकालेंगे, ठीक है। सो लॉन्ग डिवीजन में हमने ये दूसरे सम में हम कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन में आगे भी हमने किया था, ठीक है। तो न्यूमरेटर k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा कोई भी एक फैक्टर से, फिर चाहे आप k प्लस 1 ले लो, k प्लस 1 ले लो या फिर k प्लस 4 ले लो, कोई भी एक फैक्टर आप ले सकते हो। मैं k प्लस 4 लेने वाला हूँ, सो यहाँ पे हम k प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल k हमको लाना है k क्यूब, तो ऑब्वियसली k को हम मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर से, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर, ऑलवेज इसके साइन हमको चेंज ही करनी है। सो k क्यूब कैंसिल होगा। अभी आप देख सकते हो 6k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, सो यहाँ पे हो गया 2k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, और अभी आप देख सकते हो k को अगर 2k स्क्वायर लाना तो k को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको ट्वाइस k से, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4 टू 8k, ऑलराइट, इसके साइन चेंज करना है, सो ये कैंसिल आउट, 9k माइनस 8k एक्सेप्ट k प्लस 4। अभी आप देख सकते हो k इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 1 से, तभी वो k प्लस 4 होगा, सो उसके साइन चेंज करो तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ओके। सो इसके रिमेनिंग फैक्टर्स क्या हो गए, k प्लस 4 के अलावा दूसरा फैक्टर्स क्या हो गए, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ओके। सो वी कैन से दैट फॉर k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, इसके फैक्टर हो गए, एक फैक्टर k प्लस 4 है, दूसरे फैक्टर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स k प्लस 4 k प्लस 1 होल स्क्वायर, ऑलराइट। सो हम ये फैक्टर सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, इसके फैक्टर क्या होगा, k प्लस 4 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स इन न्यूमरेटर k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, सो एक k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, k प्लस 1 k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 k प्लस 2 k प्लस 3, एंड यू ऑब्जर्व दैट k plus 1 k plus 4 by 4 k plus 2 k plus 3, which is RHS of P of k plus 1. So P of k is true, implies P of k plus 1 is true, result number is 4. From result 2 and 4, we can say that given P is true. Question number 12. Pn is equal to a plus ar square up to so on, ar raised to n minus 1 is equal to a r raised to n minus 1 by r minus 1. It is a sum of first n terms of geometric series, okay. So step 1, for n is equal to 1, LHS of P1 is equal to स्मॉल a, ये फर्स्ट टर्म होगा, वैसे ही एग्जैक्टली RHS ऑफ P, यानी यहाँ पे n की वैल्यू हमको 1 लिखना है, r raised to 1 minus 1 by r minus 1, so r minus 1 cancel out, answer is small a, okay. So you can say that LHS of P1 is equal to RHS of P1, therefore P of 1 is true, P of 1 is true, result number 2, okay. Now step 2, for n is equal to k, let P of k, चलो P of k का मीनिंग होगा a ar
AR square up to so on AR raised to K minus 1 is equal to A R raised to K minus 1 by R minus 1 is true. Alright, result number 3. So for n is equal to K plus 1, we have to prove that P of K plus 1, चलो P of K plus 1, यानी पहले हमको LHS of P of K लिखना है. So A plus AR plus AR square up to so on AR raised to K minus 1, उसका नेक्स्ट टर्म AR raised to K is equal to RHS में हम K को रिप्लेस करेंगे K plus 1 से is true. ऑलराइट, रिजल्ट फर्स्ट टाइम में पता चल गया. अभी हमको वेरी सिंपल LHS of P of K plus 1 से स्टार्ट करना है. सो LHS of P of K plus 1 is equal to A plus AR plus AR square up to so on AR raised to K minus 1 plus AR raised to K. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट नंबर 3 से हम वैल्यू निकालेंगे. सो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 इसकी वैल्यू हम रखेंगे. तो उसका एडिशन रिजल्ट नंबर 3 है, तो उसका एडिशन ये. सो A R raised to K minus 1 by R minus 1, नेक्स्ट टर्म A R raised to K divided by 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे. ऑब्वियसली कॉमन क्या निकलेगा? A स्मॉल कॉमन निकलेगा. सो यहाँ पे क्या रहेगा? R raised to K minus 1 by R minus 1 plus R raised to K by 1. नाउ टेकिंग LCM. सो A, चलो LCM होगा R minus 1. सो यहाँ पे R raised to K minus 1 हो जाएगा प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R raised to K plus 1 minus R raised to K. ओके, R raised to K को मल्टीप्लाई किया. सो यहाँ पे R raised to K कैंसिल आउट हो जाएगा. सो A into ब्रैकेट R raised to K plus 1 minus 1 by R minus 1 exactly given, which is RHS of P of K plus 1. लिख सकते हो. सो इक्वल टू RHS of P of K plus 1. Therefore P of K plus 1 is true. So P of K is true implies that P of K plus 1 is true. Result number 4. So from result 2 and 4, for all n belongs to capital N by PMI given VI is true. क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है. अब तक हमने 12 क्वेश्चंस किए, उसमें रिलेशंस एडिशन का था, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म वो एडिशन से कनेक्टेड थे. लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड थे. सो P of n यानी n टर्म्स का प्रोडक्ट, ये फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म अप टू सो n टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर. यहाँ पे रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है. सो टाइप नंबर 1 में मैंने सम और प्रोडक्ट लिखा है. ऑलराइट, सो स्टेप 1, for n is equal to 1. So LHS of P1 यानी Pn का फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड फर्स्ट टर्म ये वाला. सो 1 plus 3 by 1, it's a 1 plus 3 and is equal to 4. RHS of Pn, यहाँ पे n की वैल्यू मुझको 1 रखना है. सो 1 plus 1 होल स्क्वायर, 1 plus 1 2 square, it's a 4. So P of 1 is true. Reason number 4. Step 2, for n is equal to K, let P of K, n को रिप्लेस करना है K इन नंबर 1. सो P of K हो जाएगा 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 up to so on 1 plus
2k plus 1 by k square is equal to k plus 1 whole square is true. Result number 3. For n is equal to k plus 1, we have to put that p of k plus 1. बच्चों यहाँ पे अभी चेंज क्या होने वाला है? अगर एडिशन हो p of k plus 1 लिखते समय अगर एडिशन हो तो k तक हम k टर्म तक लिखते हैं, उसके बाद एडिशन में k plus 1 टर्म ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एडिशन है, तो हम क्या करेंगे? पहले p of k का k टर्म लिखेंगे, उसके बाद k plus 1 मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट करेंगे। कीप इन माइंड, ओके। सो यहाँ पे रिलेशन प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का है। सो पहले हम p of k तक लिखेंगे। सो 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 up to so 1 plus 2k plus 1 by k square into, अभी हम नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे k टर्म, ठीक है ना। सो इसमें हमको k को रिप्लेस करना है k plus 1 से। सो 1 प्लस, चलो यहाँ पे अगर आप k plus 1 लिखोगे, k plus 1 तो ब्रैकेट सॉल्व करो, 2k plus 2 plus 1 तो ये हो गया 2k plus 3 divided by k plus 1 whole square, ओके, इज इक्वल टू RHS में k plus 1 रखेंगे हम, k के रिप्लेस करके, तो k plus 1 plus 1 इट्स k plus 2 whole square is true. सो ये हमारा रिजल्ट नंबर स्टार्ट हो गया। ऑलराइट बच्चों, सो LHS ऑफ p of k plus 1 से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ LHS ऑफ p of k plus 1 is equal to 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 up to 1 plus 2k plus 1 by k square into 1 plus 2k plus 3 by k plus 1 whole square. Alright, first of all from result number 3, so from result number 3, okay, result number 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू result number 3 की ये वैल्यू हमको मिली k plus 1 whole square, so यहाँ पे मैं लिखूँगा k plus 1 whole square into ये वैल्यू 1 plus 2k plus 3 by k plus 1 whole square. Alright, now taking LCM in bracket, यहाँ पे हमको LCM लेना है, so k plus 1 whole square, so LCM होगा k plus 1 whole square, ये k plus 1 whole square यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2k plus 3. Alright, so ये कैंसिल हो गया। Now solving the bracket, that is इसका एक्सपांशन k square plus 2k plus 1 plus 2k plus 3, चलो इसका एडिशन करो तो k square plus 4k plus 4 हो जाएगा, 2k plus 2k 4k and 1 plus 3 4, which is a perfect square. किसका perfect square हो गया? k plus 2 whole square, and it is a RHS of p of k plus 1 is equal to RHS of p of k plus 1. So we can say that p of k plus 1 is true, therefore p of k is true implies p of k plus 1 is true. Result number 4. So from 2 and 4, for all n belongs to n by PMI, given Pn is true. क्वेश्चन नंबर 14, p of n is equal to, यहाँ पे भी रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, ओके, दो टर्म्स के बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, कीप इन माइंड। सो स्टेप 1, फॉर n is equal to 1, LHS of p1 is equal to ये वाला टर्म 1 plus 1 by 1, इट्स 1 plus 1 2, RHS of p1, यहाँ पे n की वैल्यू हमको 1 रखना है, सो 1 plus 1 इट्स 2, सो p of 1 is true. Result number 2.
for step 2, for n is equal to k, let p of k, चलो यहाँ पे p of k क्या होगा, n को रिप्लेस करना है k से, so 1 plus 1 by 1 into 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 3 up to so on 1 plus 1 by k is equal to k plus 1 is true. Reason number 3, for n is equal to k plus 1, p of k, we have to prove that, sorry, we have to prove that p of k plus 1 ये होगा 1 plus 1 by 1 into 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 3 up to so on 1 by 1 plus 1 by k into next term 1 plus 1 by k plus 1 is equal to RHS में हो जाएगा k plus 2 is true. Okay, right? Now from LHS of p of k plus 1, so LHS of p of k plus 1 is equal to 1 plus 1 by 1 into 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 3 up to so on 1 plus 1 by k into 1 plus 1 by k plus 1, ये हमारा LHS of p of k plus 1 है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीजन नंबर 3 से वैल्यू रखेंगे. सो यहाँ तक वैल्यू हमारे पास रीजन नंबर 3 की है. सो फ्रॉम रीजन नंबर 3 ये वैल्यू होगी k plus 1. सो k plus 1 into next term 1 plus 1 by k plus 1. Now taking LCM in this bracket, so k plus 1 into k plus 1 plus 1 by k plus 1. ये k plus 1 कैंसिल हो गया, तो k plus 1 plus 1 that means k plus 2, and which is our RHS of p of k plus 1. Therefore p of k plus 1 is true. So p of k is true implies that p of k plus 1 is true. Result number 4. Alright. So from 2 and 4, for all n belongs to capital N by PMI given Pm is true. Question number 15. Pn is equal to 1 square plus 3 square plus 5 square up to 2n minus 1 square is equal to 2n minus 1 2n plus 1 by 3. For step 1, for n is equal to 1, so LHS of P1 it's a 1 square and वो होता है 1, and RHS of P1 is equal to, यहाँ पे n की वैल्यू हमको 1 रखना है, सो 1 2 minus 1 1 2 plus 1 3 divided by 3, so 3 3 cancel out, answer is 1. So p of 1 is true. Okay, step 2, for n is equal to k, let p of k is true, and p of k होगा 1 square plus 3 square plus 5 square up to 2k minus 1 whole square is equal to k 2k minus 1 2k plus 1 by 3 is true from result number 1. Okay, for n is equal to k plus 1, we have to prove that p of k plus 1 of k, p of k plus 1 यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, पहले 1 square लिखेंगे, 3 square 5 square up to so on k term of p of k,
2k माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी हमको उसकी नेक्स्ट डिवाइड करना है। कैसे हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे? वेरी सिंपल, k को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से। सो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आप k के रिप्लेस करो k प्लस 1 से। सो इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या होगा? 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इसमें k को रिप्लेस किया k प्लस 1 से। सो 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। RHS में k को रिप्लेस करो k प्लस 1 से। सो k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 1 रखोगे तो 2k प्लस 2 माइनस 1 इट्स 2k प्लस 1 एंड यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 1 इट्स 2k प्लस 3 divided by 3 is true. These are number start. Okay, now LHS of P of k plus 1, right? So LHS of P of k plus 1 यानी 1 square plus 3 square plus 5 square up to so on 2k minus 1 whole square plus 2k plus 1 whole square. First of all, from result number 3. So from result number 3 ये वैल्यू रख दो। result number 3 में हमको ये वैल्यू मिली k 2k minus 1 2k plus 1 by 3 and next term 2k plus 1 whole square divided by। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकलेगा? 2k plus 1 सो इन ब्रैकेट k 2k minus 1 by 3 plus 2k plus 1 divided by 1. Okay, now taking LCM. So 2k plus 1 चलो LCM 3 होगा। ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2k स्क्वायर माइनस k एंड 3 को मल्टीप्लाई करो। ये 3 को इसके मल्टीप्लाई करो। सो 6k plus 3. Okay, that is 2k plus 1 in bracket चलो 2k स्क्वायर फिर यहाँ पे होगा प्लस 5k प्लस 3। अभी उसका हमको फैक्टर निकालना है। 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 उसके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर में यहाँ पे निकालूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। 2 3 6 2 प्लस 3 5 होता है। सो इसके फैक्टर हो गए 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। फर्स्ट टू में से कॉमन निकलेगा 2k तो ब्रैकेट में होगा k प्लस 1। इसमें से कॉमन निकलेगा 3 तो ब्रैकेट में होगा k प्लस 1। सो फाइनली k प्लस 1 कॉमन तो दूसरे ब्रैकेट में होंगे तो k प्लस 3। चलो ये वैल्यू हम न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है ना? सो 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट इज देख सकते हैं k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3 k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड विच इज RHS ऑफ P of k plus 1। उसके बाद आपको क्या लिखना है? therefore P of k plus 1 is true। so P of k is true implies P of k plus 1 is true is a number of Question number 16. P of n is equal to 1 by 1 into 4 multiplication relation से plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 up to so this. Okay. So step 1 for n is equal to 1. LHS of P of 1 is equal to 1 by 1 into 4 is equal to 1 by 4. RHS of P of 1 यानी यहाँ पे मुझको n की वैल्यू 1 रखना है। सो 1 by 3 plus 1 4। ओके, समझ में आ गया? therefore P of 1 is true। Result number 2. Step 2 for n is equal to k, let P of k, okay, P of k की वैल्यू होगी 1 by 1 into 4
plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 up to so on. 1 by 3k minus 2 into 3k plus 1 is equal to k by 3k plus 1 is 2. Result number 3. Now for n is equal to k plus 1, we have to do that p of k plus 1. Okay, p of k plus 1 का मीनिंग होगा 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 up to so on. 1 by पहले हमको ये लिखना है 3k minus 2 into 3k plus 1. अभी हम उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म के लिए आप कौन सा लॉजिक यूज करोगे? लॉजिकल मेथड देख सकते हो 1 into 4, उसके बाद 4 से स्टार्ट हो रहा है 4 into 7 यानी डिफरेंस 3 का है 4 plus 3 7, उसके बाद 7 plus 3 10. ओके, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3k minus 2 3k plus 1 3k plus 1 नेक्स्ट होगा. स्टार्ट करेंगे हम 3k plus 1 से, सो 3k plus 1 से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज आप देख सकते हो 4, सो स्टार्टिंग 4 से होता है. ये आखिरी टर्म 7 है तो नेक्स्ट टर्म 7 से स्टार्ट होता है. सो आखिरी टर्म ये है तो उसका नेक्स्ट टर्म 3k plus 1 से स्टार्ट होगा. एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 3 1 plus 3 4 4 plus 3 7 7 plus 3 10. तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो होगा 3k plus 4. ओके, इसी को तो आरएचएस में हमको k को रिप्लेस करना है k plus 1 से. यहाँ पे k plus 1 लिखोगे तो 3k plus 3 plus 1 इट्स 3k plus 4 is true. Result number start. All right, bachcho. Now LHS of p of k plus 1. So LHS of p of k plus 1 is equal to 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 up to so on. 1 by 3k minus 2 into 3k plus 1 plus 1 by 3k plus 1 into 3k plus 4. ओके, ये LHS of p of k plus 1 हो गया. अभी हमको रिजल्ट नंबर 3 की वैल्यू रखना है. सो ये रिजल्ट नंबर 3 से फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 इसकी वैल्यू ये k by 3k plus 1 एंड नेक्स्ट टर्म 1 by 3k plus 1 3k plus 4. नाउ टेकिंग कॉमन निकलेगा 1 by 3k plus 1, ये दोनों में कॉमन 3k plus 1 है. सो 1 by 3k plus 1 कॉमन निकलेगा. सो k by 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 3k plus 4. ऑलराइट, नाउ टेकिंग एलसीएम इन दिस ब्रैकेट. सो 1 by 3k plus 1, चलो एलसीएम 3k plus 4 होगा. k को मल्टीप्लाई करेंगे 3k plus 4 से, सो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1. अभी हमको न्यूमरेटर के फैक्टर निकालने हैं. ओके, सो न्यूमरेटर में 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 है. सो 3 1 जा 3 प्लस 1 4 होता है. सो यहाँ पे फैक्टर निकलेगा 3k प्लस 1k. ऑलराइट, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू. फर्स्ट टू में से कॉमन निकलेगा 3k इन ब्रैकेट k प्लस 1. लास्ट टू में से कॉमन निकलेगा 1 इन ब्रैकेट k प्लस 1. सो फाइनली कॉमन k प्लस 1. सो दूसरे ब्रैकेट में होगा k प्लस 1. ओके, सो हम ये वैल्यू रखेंगे. सो न्यूमरेटर में k प्लस 1 3k प्लस 1, डिनोमिनेटर में 3k प्लस 1 3k प्लस 4. सो ये कैंसिल होगा. सो आवर फाइनल आंसर k प्लस 1 by 3k plus 4 and which is RHS of p of k plus 1. Okay, RHS of p of k plus 1. So p of k plus 1 is true. Hence result number 4. Question 17, last sum for type number 1. Step 1, for n is equal to 1. LHS of P1 is equal to 1 by 3 into 5
It's a 1 by 50. RHS of P of 1 is equal to, यहाँ पे n की वैल्यू हम वन रखेंगे 1 by 3 into 5. Okay, 2 plus 3 5. So it's a 1 by 50. Therefore, P of 1 is true. Reason number 2. Step 2. For n is equal to k, let P of k, okay, P of k का मीनिंग होगा 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 up to 1 by 2k minus 1, 2k plus 3, sorry, 2k plus 1, 2k plus 3, 2k plus 1, 2k plus 3 is equal to k by 3. 2k plus 3 is true. Okay. Now for n is equal to k plus 1. We have to do that P of k plus 1. चलो P of k plus 1 होगा 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 up to so on. 2k plus 1, 2k plus 3. चलो नेक्स्ट टर्म कहां से स्टार्ट होगा? 2k plus 3 से. 2k plus 3 एंड डिफरेंस कितना है? दो टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 2 है, आप देख सकते हो. 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 2k plus 1 plus 2, 2k plus 3. तो इसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो 2k plus 5 हो जाएगा. एंड RHS में क्या हो जाएगा? k plus 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 एंड यहाँ पे आप k plus 1 रखोगे. सोचो तो 2k का मीनिंग क्या होगा? 2k plus 2 plus 3, that means 2k plus 5 is true, which is result number star. So LHS of P of k plus 1 is equal to 1 by 3 into 5 plus 5 into 7 up to so on, 1 by 2k plus 1, 2k plus 3 plus 1 by 2k plus 3 into 2k plus 5. Okay, first of all from result 3. So from result number 3, ये वैल्यू रख लो. रिजल्ट नंबर 3 की ये वैल्यू है हमारे पास. So k by 3, 2k plus 3. नेक्स्ट टर्म 1 by 2k plus 3, 2k plus 5. ओके, अभी हमको क्या करना है? ये दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा. देख सकते हो डिनोमिनेटर में से कॉमन निकलेगा 2k plus 3. So taking common 2k plus 3 in denominator, 1 by 2k plus 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे होगा k by 3 प्लस यहाँ पे होगा 2k plus 5. ओके, नाउ टेकिंग एलसीएम. सो 1 by 2k plus 3. चलो इसका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम में होगा 3 into 2k plus 5. ये 2k plus 5 k से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2k स्क्वायर प्लस 5k plus 3. ओके, अगेन न्यूमरेटर में आप देख सकते हो, न्यूमरेटर में हमारे पास हमको मिला 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3. इसके फैक्टर 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3. चलो इसके फैक्टर 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5. सो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3. फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में से कॉमन निकलेगा 2k, तो इन ब्रैकेट k प्लस 1 होगा. लास्ट में से कॉमन निकलेगा 3, सो इन ब्रैकेट k प्लस 1 होगा. फाइनली k प्लस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में होगा 2k प्लस 3. ओके, सो ये वैल्यू हम रख देंगे, दैट इज k प्लस 1 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 3 into 3 into 2k plus 5. Now 2k plus 3 cancel out. So finally k plus 1 divided by 3 into 2k plus 5, and which is RHS of P of k plus 1. Therefore P of k plus 1 is true. So P of k is true implies P of k plus 1 is true. Result number 4. Okay. So from 2 and 4 for all n belongs to n by PMI given Pn is true. Alright.